Hello dear students, welcome back. I am Shweta and today we are going to start our first practical session. This practical we are going to perform from the skill set 1, that is daily computing. This chapter or this practical is based on Libreoffice. So see, this is the skill set 1. And in this skill set 1, you are having total 4 practicals. How many practicals? 4 practicals. From these 4 practicals, for COVID-19, this practical number 2nd, this mail much practical, this is cancelled from the only for the COVID-19 situation. This practical has been cancelled. Okay, so this practical, if you want, you can perform it by yourself. This is for self study, or you can say self learning. So we are not going to perform SOP2. So SOP2 we are not going to perform, and instead the rest 3 SOPs. One second, I will show you this 3. SOP1, that is create a resume. Then SOP3, create a mark list. The mark list should display all these things. And the 4th SOP, that is create an informative presentation on your college. From this remaining 3 practicals, एक तो cut हो गया, right? Total 4 practicals were there, but 1 is for self study, that is self learning. So this we are not going to perform, and the remaining one is resume, means this is a word practical. MS word का practical है ये, हमको word में करना है. Then this is mark list, means this is a Excel practical, right? Spreadsheet. Then last one is PPT, that is PowerPoint. So from this 3 also we want to perform any 2 practicals of our choice. इन तीनों में से भी आपको सिर्फ 2 ही प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं फॉर एग्जाम, एंड दैट ऑल्सो ऑफ आवर चॉइस. सो मोस्ट प्रोबेबली ऑल ऑफ देम नो द वर्ड डॉक्यूमेंट्स. बहुत जनों को वर्ड पता होता है कि कैसे टाइप करना है, वर्ड में क्या डॉक्यूमेंट कैसे टाइप करते हैं, रेज्यूमे कैसे टाइप करते हैं. This is for the word. Okay, so I am going to not take this practical. Instead of this, I am going to perform SOP3 and SOP4. So हम लोग skill set 1, इसमें से we are going to do only 2 practicals, that is SOP3 and SOP4. So see, this is the decision made by the government. So from they have mentioned that in this COVID-19 situation, we should take only 2 practicals from skill set 1. स्किल सेट 1 से आपको सिर्फ 2 ही प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं. उसमें से एक तो कैंसिल ही कर दिया, दिस इज फॉर द सेल्फ लर्निंग, एंड फ्रॉम दिस 3 प्रैक्टिकल्स वी हैव टू परफॉर्म ओनली 2 प्रैक्टिकल्स. So which I'm going to perform SOP3 and SOP4. Okay, so today we are going to see only this practical, only SOP3 practical we will see today, and in the next lecture we will see this PowerPoint practical. Okay, so see, question number 3rd, SOP3 practical number 1. So now you're not having journals, but whenever the college starts, or whenever we are going to give the journals, that time you can write these practicals in your journals, or otherwise today also, means when you're seeing the session, that time also you can note down this practical in your rough book. Okay, so the steps for writing this is not given इन दिस प्रैक्टिकल. यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिख के नहीं दिया है आपको. जब आपको जर्नल्स में लिखना होगा तब मैं आपको बताऊंगी कि स्टेप्स कैसे लिखने हैं. टुडे वी विल जस्ट परफॉर्म द प्रैक्टिकल. आज हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकली देखने वाले कि ये प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है. ओके, वन मोर थिंग, दिस प्रैक्टिकल वी आर गोइंग टू डू इन लिब्रे ऑफिस, क्योंकि ये लिब्रे ऑफिस में बताया है आपको करने के लिए. जो भी प्रैक्टिकल होगा, वर्ड का हो या एक्सेल शीट या फिर पावर पॉइंट, वी वॉन्ट टू परफॉर्म दैट प्रैक्टिकल्स इन लिब्रे ऑफिस. बट डोंट वरी, जिसके घर पे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उनको लिब्रे ऑफिस कैसे इंस्टॉल करना है दैट आई विल शो यू. बट इफ यू आर नॉट हैविंग लैपटॉप और व्हाट वी से कंप्यूटर इन योर होम, देन इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म इट इन द मोबाइल, तो मोबाइल में आपको लिब्रे ऑफिस का वर्जन नहीं मिलेगा इंस्टॉल करने के लिए. इंस्टेड ऑफ लिब्रे ऑफिस देयर इज सम कोलैबोरो लाइक वाइज ऐप इज गिवन फॉर विच वर्क सिमिलर टू दैट ऑफ लिब्रे ऑफिस. लेकिन उसका भी ज़रूरत नहीं है. आप सिंपली एक्सेल या पीपीटी आपके एंड्रॉयड मोबाइल में आप इंस्टॉल करोगे, वो ऐप्स
आप वो ऐप में भी आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो भी चलेगा. ओके, सो डोंट टेक टेंशन बिकॉज फ्रॉम द 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू 12th में आपको दिस लिब्रे ऑफिस या फिर MS ऑफिस दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. The important thing is HTML, okay, and Tally, database Tally, HTML. These are the important practicals which we are going to perform in 12th standard. So this practical, whatever we are going to perform, mark list and PowerPoint, even if you are not having the LibreOffice, you can practice these questions in your MS Office. Okay, but as it is told that perform these practicals in LibreOffice, so I will show you how to perform it in the LibreOffice. If you're having laptop, if you're having computers, you can install LibreOffice. For Windows, if you're having Windows, mostly this LibreOffice for the Ubuntu operating system, but then too you can install this LibreOffice in Windows also. Okay, so this is the question. Before starting that, I would like to tell you how to install LibreOffice in Windows. Okay, so see. See, in Google, you have to write free download of LibreOffice for Windows 10. Now see, Windows 10 means this is your operating system. Now in my laptop, I am using Windows 10 operating system. आपके लैपटॉप में अगर Windows 7 है तो आप Windows 7, Windows 8 जो है वो डाल के देखना कि LibreOffice के ऑप्शंस क्या आते हैं. Okay, now see for Windows 10, this is the site name www.libreoffice.org. so click on this website. Once you click on this website, now this is going to show you the options. Now this is for Windows operating. See, you can see Windows 64-bit and you can see your Windows. This is also for 64-bit, but if you want for 32-bit, you can click on this option and you can select the 32-bit. So ये Windows 64-bit, Windows 32-bit ये आपके मशीन में होता है कि आपका Windows ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 32-bit का है या 64-bit का है. So depending upon that you have to select. Okay, then once you select, what you'll do, you will download it. This is the for previous version and this is Windows 7.1.0 is a latest version. Okay, so you can select anyone whichever you want, but first check that what is the which Windows you have, 64-bit or 32-bit, then only you have to download that. Okay, then afterwards you have to click download and it will ask you whether to save or not. Then that time you have to click save. Okay, once it gets installed, then you can start it. Okay, then okay, so I have already installed this LibreOffice, so I will show you directly work in LibreOffice. Okay, so see, this is the LibreOffice which I have installed. Now I will just double click on this. Let it start. This is our question. I will show you the question once again. So see, create a mark list. तो आपको प्रैक्टिकल क्या करना है, मार्क लिस्ट बनाना है. तो हेडिंग क्या आएगा, मार्क लिस्ट. ओके, द मार्क लिस्ट शुड डिस्प्ले. मार्क लिस्ट क्या क्या डिस्प्ले करना चाहिए, फील्ड्स, नेम, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टोटल एंड परसेंटेज. सी यहाँ पे रोल नंबर नहीं है, आपको नाम से स्टार्ट करना है. देन सब्जेक्ट कौन से, मैथ्स, फिजिक्स. क्वेश्चन जैसा दिया है वैसा ही करना है. आप हम लोग अपने मर्जी से OC SP ऐसा नहीं लिखने वाले. ओके, नेम, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. सो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आते हैं, 1 2 3 4 सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं, प्लस आपको नेम लेना है. ओके, सो हम लोग मार्क्स लेंगे आउट ऑफ 100. ओके, सो वी आर गोइंग टू टेक मार्क्स आउट ऑफ 100 for 4 subjects. Then we want to write total, we want to write percentage. Below each subject find out the lowest marks and highest mark. हर एक सब्जेक्ट के नीचे आपको लिखना है कि वो सब्जेक्ट के सबसे हाईएस्ट मार्क और सबसे लोवेस्ट मार्क कौन से हैं, हर एक सब्जेक्ट के नीचे. दैट ऑल्सो आई विल शो यू. एंटर मिनिमम 10 रिकॉर्ड्स. कितने रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं, 10 रिकॉर्ड्स. डिक्लेयर द फर्स्ट 3 रैंकर स्टूडेंट्स. ये जो 10 स्टूडेंट्स आप एंटर करोगे मार्क्स, उसके बाद आपको 3 रैंकर, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, ये तीनों स्टूडेंट्स के डिक्लेयर द फर्स्ट 3 रैंकर स्टूडेंट्स. मीन्स रैंकर स्टूडेंट्स के आपको क्या लिखने हैं कि किस परसेंटेज को आपको रैंक मिला है. ओके, दैट ऑल्सो. एंड इफ यू वांट यू कैन राइट द नेम ऑल्सो. क्रिएट अ चार्ट बेस्ड ऑन द एबो डेटा. तो जो भी डेटा आपने फिल किया रहेगा उसके ऊपर आपको चार्ट भी बनाना है.
Okay, so we will see that question. So see, let us see. This LibreOffice has been started. So see, ये LibreOffice है. LibreOffice, it looks like this. Okay, now see, your writer document. Writer document means MS Office. This is LibreOffice. और अगर MS Office रहता तो instead of writer document क्या होता था? MS Word. Okay, फिर calculation spreadsheet. Calculation spreadsheet means what? It is nothing but MS Excel. Okay, then impress presentation. Impress presentation क्या होता है? PowerPoint. पावर पॉइंट फ्रॉम द विच टर्म फ्रॉम MS ऑफिस. MS ऑफिस में इसको पावर पॉइंट कहते हैं. ड्रॉ ड्रॉइंग. ड्रॉ ड्रॉइंग वो MS ऑफिस में क्या होता है? पेंट ब्रश, राइट. देन maths formula, this is some different one, this is not there in your MS office. Maths formula, your all mathematical formulas are there. Then last one is base database. Base database LibreOffice में base database है और MS office में उसका नाम होता है Microsoft Access. Okay, so today we are going to perform practical in this calculation spreadsheet. So I will just double click it. Okay, so this is the Excel sheet. So it is similar to that of the Excel only. This calculation spreadsheet of LibreOffice, this is same as that of what? That of MS Office Excel. Okay, so before giving the heading, I will write. आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा पता नहीं. So I will just I will maximize the size so that you will be able to see it. Okay. Okay, so the first field which we are going to write is name. Then second was maths. Third was physics. Fourth was chemistry. And fifth was biology. Okay, just double tap this field so आपको बराबर दिखेगा. Okay, double tap it. Okay, so now I want to give heading as mark list. तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे fields को select करेंगे biology तक. No, I want total and percentage also, right? So I will write here total first, then I will write here percentage. Percentage. Okay, now I will select this first. देखो मैंने फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे हेडिंग लिखना है. तो 1 2 3 4 5 6 इतना पूरा मिला के. नाउ व्हाट यू विल राइट मर्ज एंड सेंटर, राइट. यू वांट टू राइट हियर, यू वांट टू सेलेक्ट व्हाट, मर्ज एंड सेंटर द सेल्स. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अभी बीच में हेडिंग लिख सकते हो, मार्क लिस्ट, राइट. सो दिस इज द हेडिंग मार्क लिस्ट. नाउ यू वांट टू एंटर 10 रिकॉर्ड्स. आपको कितने रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं? 10 रिकॉर्ड. Then I'm going to write ABCD name. You can write the name of your friends or any name whatever you want, but आपको 10 names लिखने हैं. So I'll just write A B C D likewise. One. So these are the 10 students name. Okay, now we want to enter the marks. कुछ भी marks enter करो, that mark should be out of 100. So I will just enter any marks. Okay.
टोटल आपको एंटर नहीं करना है, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, सो कीप दैट वन aside and rest you can enter. Okay, so I have done. I have entered the this, what you can say, marks. Now I'll just select all these things so that I can make the table of this. Means I will give border lines for this. If border line is there, okay, this one you can select borders and you can give all borders. Okay, so this will look like a table. Okay, now what we want to do, we have entered the records of 10 students. Now we want to calculate total and percentage. For that you should know the formula. Okay, now see, for total there is no formula. You want to just add all the subject. Okay, 1 2 3 4 all subject आपको add करना है. तो यहाँ पे instead of writing it orally or calculating it, here we are having the formula. See, यहाँ पे आपको summation sign दिख रहा है. Select function, from this you can select what, sum. आपको first वाला select करना है function, that is a sum. So sum किया तो इसने कहा कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक सम, ऑटोमेटिकली इट हैज सेलेक्टेड फ्रॉम दिस B3 टू E3, राइट. तो इसने सम के लिए इसको सेलेक्ट किया है. सो इज दिस ओके फॉर यू? अगर ये करेक्ट फॉर्मूला है तो आपको ये टिक रहता है. एक रॉन्ग ऑप्शन है कैंसिल एंड दिस इज एक्सेप्ट. सो यू कैन क्लिक ऑन दिस करेक्ट ऑप्शन. आपको करेक्ट पे क्लिक करना है. ओके, सो दिस इज फॉर लिब्रे ऑफिस. इन केस ऑफ एक्सेल आई थिंक डायरेक्टली आपने फॉर्मूला एंटर कर दिया और एंटर बटन दबाया तो डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाता है. बट यहाँ पे टिक नहीं करोगे तो वो नहीं लेता है, वो सिर्फ आपको फॉर्मूला दिखाते बैठेगा. सो द टोटल ऑफ दिस 4 सब्जेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट, ए का मार्क्स कितना आया टोटल 340. ओके, अभी सबको आपको फॉर्मूला लिखने का जरूरत है क्या? नहीं. यू कैन ऑटो फिल इट. ऑटो फिल कैसे करते हैं कि एक को फॉर्मूला अगर अप्लाई हो गया तो सारे जन को वो सेम फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए. ओके, मीन्स वो यहाँ से यहाँ पे इसके लिए भी कैलकुलेट करेगा, यहाँ से यहाँ पे इसके लिए भी. तो एक आपने कर दिया. कैसे किया देखा? शुड आई शो यू? सी, यहाँ पे उसका फॉर्मूला आ रहा है कि कैसे आता है. इज इक्वल टू, एक बात याद रखना, जब भी आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आप हमेशा फॉर्मूला इक्वल टू साइन से ही शुरू करोगे. अगर आपने इक्वल टू नहीं लिखा तो वो नहीं लेगा. ओके, यहाँ पे तो मैंने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट सम किया था, लेकिन परसेंटेज के लिए हमको फॉर्मूला खुद से लिखना है. तो दैट टाइम हमेशा याद रखना, फॉर्मूला लिखते समय इक्वल टू साइन डालना है, फिर फॉर्मूला लिखना है, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू टेक. ओके, तो अभी ये फॉर्मूला तो लिखा मैंने, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट B3 टू B3 कोलन E3. इसका मतलब क्या होता है? ये है B3. सी, यहाँ पे B3 लिख के आएगा. यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है B3. देन दिस इज व्हाट, C3. देन दिस इज D3 एंड दिस इज E3. सो ये 4 को वो ऐड कर रहा है. ओके, दैट इज अ सम ऑफ दिस थिंग. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट ड्रैग दिस. ये देखो यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, सो आपको सिर्फ ड्रैग करना है नीचे तक.
जितने तक आपको टोटल चाहिए। तो यहाँ पूरे 10 स्टूडेंट्स का टोटल हो गया। दिस इज ऑटोफिल। मीन्स यहाँ पे आपने ड्रैग कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला सबको अप्लाई कर देगा और सबको वो अप्लाई हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज परसेंटेज। यहाँ पे परसेंटेज के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। सो यहाँ ये भी फॉर्मूला ही था, लेकिन ये मैंने यहाँ से लिया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे परसेंटेज के लिए फॉर्मूला नहीं है, एवरेज के लिए है, मिन मैक्स के लिए, काउंट के लिए, लेकिन परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट हियर इक्वल टू, फिर परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल इंटू 100 डिवाइडेड बाय ये चारों सब्जेक्ट का टोटल। दैट मीन्स आउट ऑफ कितना है, मैथ्स के मार्क्स आउट ऑफ 100, फिजिक्स आउट ऑफ 100, केमिस्ट्री आउट ऑफ 100, बायो आउट ऑफ 100। तो टोटल कितना आएगा इनका, 100 प्लस 100 प्लस 100 करेंगे तो 400। ओके, सो आपको टोटल यानी ये टोटल, ये इसको कितना मिला है, तो ये क्या कौन सा फील्ड है, F3। देखो इसने F3 ले लिया यहाँ पे, क्योंकि ये F कॉलम में है और ये थर्ड रो पे है। ओके, F कॉलम, और ये जो है F कॉलम में थर्ड रो है। फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, और ये थर्ड रो, इसलिए उसने खुद से ले लिया F3। अब आपको क्या लिखना है, मल्टीप्लाई इंटू 100, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, देन डिवाइड बाय 400, टोटल कितना है 400। ओके, सो नाउ एंटर, आ गया परसेंटेज, फर्स्ट परसेंटेज आ गया आपका 85। अभी सेम फॉर्मूला आपको सबके लिए अप्लाई करना है। ओके, सो विल जस्ट अगेन ड्रैग इट। कैसे करोगे, प्लस साइन आना चाहिए यहाँ पे, फिर आपको नीचे तक पूरा ड्रैग करना है। ओके, तो सबके परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो गए। ओके, आई विल जस्ट मेक इट 80। सो अंडरस्टूड, ये सबको परसेंटेज उसने ले लिया ऑटोमेटिकली। सो अंडरस्टूड कैसे किया, परसेंटेज इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है आपको इनपुट लाइन पे, यहाँ पे भी आप फॉर्मूला डाल सकते हो वो फील्ड को सेलेक्ट करने के बाद, इज इक्वल टू F3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 400। आप पूछोगे F3 क्या है, F3 क्या होता है, ये जो फील्ड है F कॉलम में, यानी टोटल, हमको टोटल चाहिए। ओके, तो टोटल ये स्टूडेंट का टोटल आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो ये है F कॉलम का थर्ड रो, इसलिए इसको F3 कहते हैं। यहाँ पे लिख के आएगा F3। मेरे इसमें F3 आ रहा है, आपके इसमें अगर कोई और कॉलम आता है, आपने अगर रोल नंबर ऐड किया तो आपका कॉलम शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको चॉइस सेलेक्ट करके देखना है कि यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे नेम बॉक्स में अगर आपको E3 आया या फिर G3 आया तो आपको वो लिखना है, या फिर G4 आया या फिर G2 आया, और वॉट एवर, सो वो आपको लिखना पड़ेगा फॉर्मूले के अंदर। ओके, यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर आपको वो वाला फील्ड का नाम लिखना पड़ेगा, इंटू 100 एंड डिवाइड बाय 400। ओके, आई होप कि ये क्लियर है आपको। अगर नहीं तो यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑल्सो कि ये कैसे करना है। ओके, सो यहाँ तक फिनिश। सी वी विल सी अगेन सी द क्वेश्चन की क्या चाहिए था। फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला जो था फील्ड एज, ये हम लोग का हो गया। बिलो ईच सब्जेक्ट फाइंड आउट द लोवेस्ट मार्क्स एंड हाईएस्ट मार्क्स, ये हमें करना है। एंटर 10 मिनिमम रिकॉर्ड, दिस वी हैव डन। ओनली दिस सेकंड क्वेश्चन वी हैव टू डू, दैट इज बिलो ईच सब्जेक्ट फाइंड आउट द लोवेस्ट मार्क्स एंड हाईएस्ट मार्क्स, हर एक सब्जेक्ट के नीचे। तो वी विल जस्ट राइट ओवर योर लोवेस्ट मार्क्स। ओके, हम लोग ऐसा लिखेंगे लोवेस्ट मार्क्स, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाईएस्ट मार्क्स। Okay, lowest marks and highest marks. I will just font size I will do it small so that वो मुझे एक ही कॉलम में दिखना चाहिए। मैंने क्या किया, क्योंकि इसके नीचे आना चाहिए ये मार्क्स। ओके, तो ये कॉलम में जाएगा तो मुझे नहीं चाहिए। सो आई विल जस्ट हियर आई विल राइट alt, आई विल प्रेस alt एंड एंटर, तो ये नीचे दिखेगा। ओके, ये दोनों नीचे दिखेंगे। तो मैथ सब्जेक्ट का लोवेस्ट मार्क्स। सो नाउ सी, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, लोवेस्ट मार्क्स के लिए क्या फॉर्मूला है,
मिनिमम, ओके, मिनिमम फ्रॉम दिस, ये सब्जेक्ट के अंदर से, यानी देखो अभी आपको कैसे सेलेक्ट करना है, आपको ये सब्जेक्ट का मिनिमम मार्क्स चाहिए, ओके, मैथ सब्जेक्ट का मिनिमम मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे लिखना है। तो मिनिमम यहाँ से फाइंड आउट करना है आपको इस कॉलम से। सी यहाँ पे B3 आया, B3 से लेके कहाँ तक आपको जाना है, B12 तक, ओके, B3 टू B12। तो यहाँ पे फॉर्मूला है इसके लिए, लेकिन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको फॉर्मूला पे जाना है, फिर मिन, ओके, व्हाट यू राइट, मिन। फिर देखो उसने B13 तक किया है, लेकिन आपको B13 तक नहीं चाहिए, आपको कहाँ तक चाहिए, आपके मार्क्स B12 तक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लाइन पे जाके इंस्टेड ऑफ B13 आई विल राइट B12, ओके। ये कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया, मैंने यहाँ से किया है फंक्शंस में से, तो आप खुद के इसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू मिन ब्रैकेट B3, यानी ये सेल से लेके मैंने क्या किया है लास्ट सेल तक, यानी ये पूरे कोलन का मतलब क्या होता है, फ्रॉम टू लास्ट, डायरेक्ट लास्ट लेगा वो, ओके। सो यहाँ से लेके यहाँ तक 12 तक, B12 तक, B3 B4 B5 B6 B7, मुझे एक एक लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, मैंने B3 स्टार्टिंग का सेल लिखा, फिर कोलन लास्ट सेल, मैंने डायरेक्टली सेलेक्ट किया तो वो सेल पूरा फर्स्ट से लेके लास्ट सेल तक ले लेगा, ओके। 13th वाला सेल हमारा एम्प्टी है, दिस सेल इज अवर एम्प्टी सेल, सो इट इज गोइंग टू सेलेक्ट दिस सेल ऑल्सो, बट वी डोंट वांट दिस सेल, जहाँ तक मार्क्स है वहाँ तक ही आपको लिखना है। सो यू कैन राइट इट बाय योर सेल्फ ऑल्सो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग B13 I have deleted that 13 and I have written 12, okay। so बराबर है B3 से लेके B12 तक मुझे मिनिमम मार्क्स चाहिए। so what I will do, I will just click on this, क्योंकि मैंने यहाँ से दिया है फॉर्मूला, so I will just click, तो मुझे मिनिमम मार्क्स मिल गए 36। सी ये सब्जेक्ट में से 36 मिनिमम है क्या, आप चेक करो मैन्युअली, इफ यू विल चेक यू विल सी दैट यस 36 इज द मिनिमम मार्क्स ऑफ मैथ्स सब्जेक्ट। मैथ्स सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स है 36। किसको मिले हैं, आई को, उन्होंने वो नहीं कहा है कि किसको मिला है वो डिस्प्ले करो, इट इज ओनली सब्जेक्ट वाइज आपको मिनिमम। अभी क्या करना है, एक सब्जेक्ट का हो गया, दूसरे सब्जेक्ट के लिए मुझे फॉर्मूला लिखने का जरूरत है क्या, नहीं। व्हाट आई विल डू, यस आई विल जस्ट ड्रैग दिस, ओके, प्लस साइन आ गया, अभी आपको ड्रैग करना है इस साइड में, सिर्फ आपको बायो तक ड्रैग करना है, टोटल परसेंटेज के लिए आपको मिनिमम नहीं निकालना है, सिर्फ सब्जेक्ट के लिए निकालना है, ओके। सो आई विल ड्रैग टिल बायो। In this way we have dragged it. Now see physics में minimum marks 42 है, बराबर है 42। केमिस्ट्री में minimum marks कितने आएंगे, minimum marks 48, right। बायो में minimum marks 36, बराबर आया, okay। Similarly for maths, now instead of using this I will write formula myself। formula मैं खुद से लिख रही हूँ, देखो कैसे लिखना है, equal to max, maximum highest marks चाहिए मुझे, ब्रैकेट, मुझे किस सेल से मार्क्स चाहिए, B3 से लेके लास्ट सेल कौन सा है, कोलन लास्ट सेल कौन सा आएगा, B12, ओके। सो मुझे पूरा सेलेक्ट करने का भी जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली फर्स्ट और लास्ट सेल को सेलेक्ट कर दूंगी, तो वो कोलन बराबर से ले लेगा, और कोलन आप खुद डालो चलेगा, ओके। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, हो गया, एंटर प्रेस किया। अभी मैंने यहाँ से नहीं लिया था इसलिए मुझे टिक मार्क सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, अगर आपने यहाँ से सेलेक्ट किया तो आपको टिक मार्क को करना पड़ता है, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू कम। सो सी मैक्सिमम मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स ये सब्जेक्ट में 89 है, yes 89 is the highest। then now drag it for all the 4 subjects, okay। ओके, नाउ यू कैन सी फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स 89 है क्या, देखो यस 89 ही हाईएस्ट है। देन केमिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 87 ही हाईएस्ट है, दिस वन। देन बायो में हाईएस्ट कितने हैं, आई थिंक 95, यस 95 इज द हाईएस्ट मार्क। सो हो गया, दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव डन। आई विल जस्ट मेक टेबल फॉर दिस ऑल्सो, इसको सेलेक्ट करके इसका भी टेबल बनाते हैं, ओके। और बॉर्डर्स, so this thing also we have done it, okay। let us see the next question, this 3 things we have solved, okay। now declare the first 3 ranker students, first 3 ranker students को आपको डिस्प्ले करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ओके। सो ये जगह हम लोग चार्ट के लिए रखेंगे, चार्ट भी चाहिए, ओके। सो फर्स्ट 3 रैंकर स्टूडेंट्स, फर्स्ट रैंकर
यहाँ पे हम लोग को इसके नीचे नीचे सब्जेक्ट वाइज नीचे, सो आई विल राइट हियर ओनली. ओके, सो फर्स्ट रैंक को आई विल डिस्प्ले ओवर हियर, सेकंड रैंक को, देन थर्ड रैंक को. ओके, सो फर्स्ट रैंकर कैसे निकालते हैं? What I will do, I will write here. Okay, first ranker. Now फर्स्ट रैंकर कैसे होगा, ये फॉर्मूला डालेंगे हम लोग. ओके, इक्वल टू, फॉर्मूला डालने के लिए हम लोग को क्या लिखना है, इक्वल टू लार्ज. ओके, लार्ज ब्रैकेट. सी नाउ हमको फर्स्ट रैंक का परसेंटेज से निकालेंगे. ओके, परसेंटेज जिसका हाईएस्ट रहेगा उसका फर्स्ट रैंक आया रहेगा. सो हम लोग परसेंटेज से निकालेंगे. तो फर्स्ट फील्ड कौन सा है, G3. फर्स्ट परसेंटेज G3 है, सी G कॉलम का थर्ड रो, सो G3, देन कोलन लास्ट परसेंटेज दैट इज G12. ओके, इतना ही नहीं, इसके बाद आपको क्या लिखना है, कॉमा, इसके बाद ब्रैकेट को आपको क्लोज नहीं करना है, कॉमा 1, क्योंकि फर्स्ट रैंकर निकालना है इसलिए कॉमा 1. अभी ब्रैकेट क्लोज करके एंटर डालो. सो सी फ्रॉम दिस द हाइएस्ट परसेंटेज इज 87.5. बराबर है, सबसे हाइएस्ट परसेंटेज कौन सा है, 87.5. सो फर्स्ट रैंकर परसेंटेज इज 87.5. तो कौन है फर्स्ट रैंकर, फर्स्ट रैंकर इज दिस B. Okay, so B is the first ranker. So here you can write B. Okay, first ranker is B. Then second ranker. Now this same formula you cannot apply for this. अभी आप बोलोगे कि ड्रैग करके करेंगे तो नहीं, that formula becomes wrong. Okay, तो इसके लिए हम लोग फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू LARGE लार्ज ब्रैकेट. हम लोग को G3 से ही लिखना है. सो वी विल सेलेक्ट वन थिंग यू कैन डू, यू कैन सी, अगर आपको चाहिए कि मुझे सेम फॉर्मूला चाहिए तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट cancel this formula first. We will just select this formula, we will drag it for all these three. लेकिन यहाँ पे wrong क्या आएगा कि 1 आया है. ओके, सो यहाँ पे आपको 1 नहीं, आपको 2 डालना है सेकेंड रैंक का. बट यहाँ पे देखो और एक बात, उसने फर्स्ट को छोड़ दिया है, तो वैसे नहीं चाहिए, G3 लिखना है आपको, G3 to G13. ओके, देन एंटर. देन सेकेंड रैंक को सेम थिंग, सी G5 से चालू किया है तो आपको G3 लिखना है. एंड दिस वन इज व्हाट, थर्ड वन. ओके, एंड दिस फील्ड इज आई थिंक G12, राइट. सो यहाँ पे भी मैंने गलत किया था, यहाँ पे G12 चाहिए, इसलिए फॉर्मूला लिखेंगे तो बेस्ट है. एंड एंटर. ओके, इसके लिए हम लोगों ने G13 लिखा था, बट लास्ट फील्ड इज G12. आंसर विल बी सेम ओनली, क्योंकि 13 तो खाली सेल था. ओके, सो सी द फर्स्ट रैंक पर गॉट 87, बराबर है. सेकंड रैंक में आएगा 85, करेक्ट. देन द थर्ड वन इज 78.5. सी दिस वन, दैट इज करेक्ट. सो ए का नाम क्या था यहाँ पे, फर्स्ट रैंक को बी नाम था. ओके, सो यहाँ पे नहीं आया. ओके, वी विल राइट इट इन द न्यू फील्ड. यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट. सो here if I'm writing B, it is not going to show. So यहाँ पे लिखती हूँ मैं. ओके, यहाँ पे B, I will delete this.
So okay, I write here the names of the students. This is B. Then the second ranker is 85 percentage. 85 percentage, that is a A. Here I write A. Then the third ranker 78.5. This is G. Okay, so here I will write G. So these are the name of the students, and this is the first percent. These are the percentage. Okay, so I will just make box for this also. Okay, just select border, all borders. Okay, this way these are the students. B got first rank, A got second rank, G got third rank. समझे आपको कैसे करना है? See, I will show you the formula once again. Here, first ranker is equal to LARG, large ब्रैकेट. आपको परसेंटेज से फर्स्ट परसेंटेज आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको कोलन देना है. ओके, देन वी वांट टू सेलेक्ट लास्ट परसेंटेज, फिर वो ले लेगा कॉमा. उसके बाद आपको कॉमा देके फर्स्ट परसेंटेज लिखना है. ओके, फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है. सिमिलरली सेकेंड रैंकर के लिए आपको इज इक्वल टू LARG, लार्ज ब्रैकेट फर्स्ट वाला, देन कोलन एंड लास्ट परसेंटेज. ओके, देन कॉमा, फिर सेकेंड रैंक तो 2 लिखना है, फिर क्लोज ब्रैकेट एंड एंटर. सिमिलरली थर्ड के लिए इज इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट फर्स्ट percentage, then colon, then select last percentage, then comma and third close bracket, enter. आपको fourth ranker चाहिए, fifth ranker चाहिए, you have to do it in the similar fashion. Okay, so I'll just delete this so there should be no confusion. So we have done this also. Okay, now the last part of this question is create a chart based on the above table. आपको अभी चार्ट बनाना है इसके ऊपर. ओके, सो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? आपको कौन से डेटा के ऊपर चार्ट बनाना है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. सो व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे. ओके, वी विल सेलेक्ट नेम, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री. आपको टोटल और परसेंटेज सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं है. ओके, वी विल जस्ट सेलेक्ट व्हाट नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट के मार्क्स. इनके बेस के ऊपर आप टोटल और परसेंटेज के ऊपर मीन्स ये पूरे टेबल को अगर आप सेलेक्ट करें, if you are selecting the whole table, then also the chart will be displayed, but it will not look good. Okay, total and percentage अगर आया तो it is not going to look good. So what we will do, we will just select name of the student and the marks of the students in the different subjects. इतना मैंने टेबल को सेलेक्ट किया. पहले आपको टेबल को सेलेक्ट करना है कि आपको किसके ऊपर चार्ट बनाना है. ओके, देन गो इन इंसर्ट पे क्लिक करो, देन क्लिक ऑन चार्ट. सो यहाँ पे आपको डिफरेंट चार्ट्स दिखेंगे कि आपको कौन से चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, बार डायग्राम चाहिए या कॉलम वाइज चाहिए. ओके, लाइकवाइज आपको सब डिफरेंट चार्ट्स दिखेंगे. सो वी विल सेलेक्ट दिस चार्ट ओनली कॉलम. ओके, कॉलम में आपको अगर 3D लुक चाहिए तो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट 3D ऑल्सो. नाउ इन दिस वी आर गोइंग टू हैव द डिफरेंट शेप्स. आपको डिफरेंट शेप मिलेंगे, बार शेप, सिलेंड्रिकल शेप, आपको शेप दिखना है तो आई विल शो यू हाउ इट लुक्स. सी, this is cylindrical, then this is cone shape, this is pyramid shape. So whatever you want you can select. I am selecting the bar one. Okay, this is the bars. Okay, now what we will do, we will move on to the next one, that is a data range. यहाँ पे भी आपको कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि हम लोग ने जो डेटा सेलेक्ट किया उसके ऊपर ही हम लोग ने चार्ट बनाया है. देन नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज डेटा सीरीज. तो यहाँ पे भी पूरा डेटा सीरीज है, सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हैं, उसके ऊपर टेबल है. ओके, सो अगर आपको देन व्हाट नेक्स्ट इज अ चार्ट. क्लिक ऑन नेक्स्ट वन. नाउ यहाँ पे आपको टाइटल वगैरह आएगा. सो टाइटल इज व्हाट, हम लोग टाइटल देंगे मार्क लिस्ट है तो आई विल राइट हियर मार्क लिस्ट. ओके, देन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस मीन्स क्या होता है, दिस लाइन. सी, दिस इज द एक्स एक्सिस. ओके, एंड दिस इज द y axis. Okay, this is x axis ABCD and this 0 to 100 is a y axis. तो मुझे इसको अगर नाम देना है तो आई विल गिव नेम ऑल्सो. x axis क्या है, सारे स्टूडेंट्स के नाम है तो आई विल राइट हियर स्टूडेंट्स नेम. ओके, स्टूडेंट्स, और आई विल राइट स्टूडेंट्स ओनली. ओके, स्टूडेंट्स. देन y axis, देखो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स, फिर y axis क्या है, मार्क्स है, सो आई विल राइट मार्क्स. ओके, देखो यहाँ पे मार्क्स आ गया. ओके, सो दिस इज डन. सो आई विल जस्ट व्हाट आई विल डू, 1 second. Okay, we have done everything. Now we will just finish it. Okay, so we have finished. Now see, this is the chart table.
So see, this is a table. You can drag and maximum, minimum जो भी आपको करना है आप कर सकते हो. Okay, so this is a chart. Okay, see यहाँ पे A का जो 4 सब्जेक्ट है. See maths, A को मैथ्स में कितने मार्क्स मिले हैं 80. सो देखो यहाँ पे 80 आया. फिर फिजिक्स है रेड कलर, सेकंड इज फिजिक्स रेड कलर. सो दिस इज व्हाट हाउ मच मार्क्स 87. देन येलो कलर इज केमिस्ट्री. सो इन केमिस्ट्री सॉरी 89 था. ओके, देन केमिस्ट्री में इसको कितना मिला एक को 76. सो दिस इज अराउंड 76. नेक्स्ट इज 95, 90 के ऊपर 95. ओके, सो this is the chart. Okay, this way A के marks, B के marks, C के marks, this is shown. अगर आपको change करना है right click करो and then go to the option. Sorry, the option is not coming of chart. Insert titles, format, wall, position. हाँ, चार्ट टाइप. सी योर चार्ट टाइप इज कमिंग अगेन. अगर आपको 3D लुक नहीं चाहिए देन सिंपली बार चाहिए तो दैट 3D विल गो. ओके, से देखो 3D गया है यहाँ से. एंड अगेन अगर आपको 3D लुक में वो शेप सिलेंडर एंड कोन शेप सब आता है. अगर आपको बार चार्ट में चाहिए तो इस तरह से दिखेगा. पाई चार्ट में चाहिए तो दिस वे यू कैन सी. ओके, सो दिस इज द वे हाउ विच चार्ट. यहाँ पे चार्ट दिया नहीं तो आप कौन सा भी चार्ट यूज कर सकते हो. कौन सा भी चार्ट यूज कर सकते हो. एंड इफ यू वांट यू कैन चेंज ऑल्सो. ओके, सो आई होप दिस प्रैक्टिकल इज क्लियर टू यू. सी, हम लोग ने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए. हम लोग ने मार्क लिस्ट बनाया है, उसमें ये सारे फील्ड्स डाले. देन हम लोग ने हर एक सब्जेक्ट के नीचे लोवेस्ट मार्क्स एंड हाईएस्ट मार्क्स डिक्लेयर किया. हम लोग ने 10 रिकॉर्ड्स एंटर किए. देन वी हैव डिक्लेयर द फर्स्ट 3 रैंक स्टूडेंट्स ऑल्सो. एंड ऑन बेस्ड ऑन द डेटा we have also displayed what chart. Okay, so this all things we have done. I hope this is clear to you. So this is all for today. In the next practical or in the next lecture we are going to see the second practical, that is a PowerPoint presentation, which is very easy, and I know that you will also love it. You also love to do the PPT presentation, so that will be in the next lecture. So thank you for today. See you in the next lecture. Till then, take care, be safe and enjoy learning.